I started the process of making that, it came into my attention that my old documents in the villages that were required, the villagers had as registered me as Akash Deep. Yes. So it was in my 10th class that it came as a surprise to me that officially my name was Akash Deep. Okay. Good. Today, we have to discuss about UPSC. Do you have a study more? Yes, sir. Yes, sir. What is UPSC? How do you feel about UPSC? UPSC, sir, we can say it is a broad spectrum organization which conducts examinations of various kinds for service under union. Various examinations, their rule, their conduct, the officer's promotion, their rejection, their everything for the service of the union. So it is and there are various kinds of examinations happening under UPSC, like this geoscientist, IAS, IFS, railways, everything, NDA, NDA, engineer, CDS. Indian, yeah, Indian engineering services, economics services, various examinations. Yes. Group A and B. Yes. Which card articles is mentioned in UPSC? So specifically, UPSC is mentioned in 315 to 323 Yes. Overall, total. 315 to 322. Yes. in part 4, part 14. Part 14. Yes. Who chairman in UPSC? So chairman is Dr. Manoj Soni. Yes, chairman. What is the difference between chairman and director? All right. So director, sir, we can say that for a particular XYZ organization, there are various departments like financial department, traveling department, the recruitment department, and all those stuff. So there is the head of the department is called the director. And so the group of directors is called the board of directors. And the one director is appointed as the chairperson. So we can say chairperson presides over the meetings of the board members, like the topic, the timing, the overall results, like the path they should follow. Means when the meeting will take place, how the meeting will take place, on which topic, and the outcome. Like if we talk about the voting part, so the presiding officer won't vote unless there is a 50-50 split. So he's the deciding vote. He means in major factor, he's the deciding vote. So he decides in which way the meeting will go. So he's, we can say that, the head of the board of directors. Yes, good. Good answer. And any other questions is CEO, Chief Executive Officer. What is the difference between CEO and MD? CEO and MD, I'm sorry, sir. Okay, you have to read it. Next time we will discuss. Next question is, today topic is thermodynamics. Yes, briefly discuss. All Basic. right, sir. Yes, thermodynamics. What is thermodynamics? Sir, in thermodynamics, okay, so as the word say, thermo and dynamics. Thermal means heat. Dynamic means how it is behaving. So thermodynamics in chemistry, we majorly deals with the heat part, like heat, work, internal energy, the enthalpy part, the various things involved related to heat. Like if we are giving heat to some object, or it is emitting heat, what kind of changes are occurring inside the sample? The change in its internal energy, the work done, the expansion, compression, various other parts, that comes under the thermodynamics part.
Any application of thermodynamics? Thermodynamics, sir. If thermodynamics basically it is in every reaction we know, like in everywhere. Like if we study, all right, let me give you an example. Okay, so thermodynamics. Yesterday, you asked me in the previous interview. You asked me about what is ki- ki- kinetics. So let me relate to that. There are various reactions in which there is exothermic reaction. Various reactions are exothermic or endothermic. Yes. How temperature will change their outcome. Like I'll give you very general example. If you take any surf excel or any washing powder in your hand and you Yes. put water on it, you will feel the warmth. If it is cold water, if it is hot water, you will feel the warmth. Means it is exothermic reaction. And how and we say that the washing is more good in cold water rather than hot water. Okay. Why? Because the exothermic reaction will be more pronounced if we use the cold water. How we saw that? Because we dealt both with the kinetic part and the thermodynamic part. Thermodynamic part, how we dealt, like मतलब एनर्जी एमिट हो रही है तो हम इसे कैसे और चेंज करें वाटर के टेम्परेचर के साथ जिससे हमें मैक्सिमम आउटकम मिले. So that part, the heat part, is called the thermodynamics. Yes, good. Good answer. What is system and what is surrounding? Can you explain in a thermodynamics? Systems surroundings are the part under the consideration. Like we are considering for our research prospect, for our study prospect, we are considering just a part of the system. That is called a system. Like we are applying theories, assumptions, everything to a particular part of the surrounding. So that is called system. And the every else part that we are not concerned it with at that moment is called surrounding part. Yes, good. And what is open system and what is closed system and what is isolated system? Can you explain one by one with example? So isolated system uh, are called systems in which there is no exchange of heat and matter. Like we can say thermos. थर्मस का ढक्कन हमने बंद कर दिया तो उसके बाद ना ही उसमें से हीट निकल रही है, ना ही जो पानी भरा हुआ है ना ही वो निकल रहा है. सो इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. Closed Yes. system in which the mass won't change, like a water bottle Bisleri. Mass won't change, but the temperature can change if we put it in a refrigerator or keep it in the sunlight. So energy, the heat exchange part is taking place. So that is a closed system. Open system in which energy and mass change can happen. Like if I put water in a glass and keep it open, that is a open system. उसमें से पानी evaporate भी also होगा, temperature भी change होगा, सब कुछ होगा. So that is an open system. Yes, good. Good answer. Next topic is macroscopic properties and micro. What is difference? Macroscopic properties deals with the larger thing, large mass. Like for example, I have to compare a ball or an atom or a molecule. Macroscopic properties will be related to the ball, and microscopic properties will be related to the molecular part. The very small things like molecules, atoms, their behavior, their rotation, everything that will come under the microscopic part. And macroscopic properties are the details with the bulk, like entropy, enthalpy, free energy, everything, that part that comes under macroscopic properties. Yes, good. Next topic is intensive and extensive property in thermodynamics. Okay, so extensive and intensive. Intensive properties are those which do not depend on the size of the p- particular subject. Like
Like if I am talking about the entropy will depend कि मैंने एक चम्मच पानी लिया है या मैंने एक बाल्टी भर के पानी लिया है. Entropy will be changed. But if I'm talking about the specific heat, वो स्पेसिफिक हीट एक स्पून पानी की भी उतनी होगी और एक बाल्टी पानी की भी इतनी होगी. Yes, So good. that is different micro and macro. What is first law of thermodynamics? First law of thermodynamics says that energy cannot be created nor be destroyed, just it changes form from one form to another. Any example? If I have to tell an example, okay, boiling of water, sir. We are using combustion energy of the fuel into the molecular energy of water. Yes, good. What is the formula of first law of thermodynamics? First law of thermodynamics is Q is equals to delta Q is equals to delta U plus W. Yes. What is the role of Q in this formula? Q, sir, is the heat part, like what we are giving. Like जैसे मैंने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया तो मैंने उसको जो एलपीजी गैस से मैंने उसको हीट किया तो मैं उसको इतनी हीट दे रहा हूँ. दैट कम्स अंडर द क्यू पार्ट. Suppose Q is equal to 0. What is the formula? Yeah, W is equal If to Q is 0. What is the formula? Sir, if Q is equals to 0, we are not providing any external heat. So internal energy will be equal to minus W. And if you said that there is no PV work, so the Q will be equal to internal energy. Q is a state function and path function. Q is a path function, sir. Are you sure? Q is a path function, sir. Delta H, we are talking about the enthalpy, that is a state function. Yes. Good. And second law of thermodynamics. What is second law of thermodynamics? Second law of thermodynamics majorly deals with the spontaneity part, like in which direction the heat will flow. Like फर्स्ट लॉ में हमने कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए थे कि मतलब किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा. हमने सेकंड लॉ में रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि इसी डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा स्पॉन्टेनियसली. हम स्पॉन्टेनिटी की बात सेकंड लॉ में लेके आते हैं. What is the difference between first law and second law? स्पॉन्टेनिटी सर, मतलब हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन की कि इसी डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा स्पॉन्टेनियसली. Yes. Any example of second law of thermodynamics? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल सर लाइक हॉट कप ऑफ टी. हॉट कप ऑफ टी अगर हम एनवायरनमेंट में रख रहे हैं तो वो ठंडा ही होगा, वो और गर्म नहीं होगा. सो जो हीट ट्रांसफर है वो हॉट कप ऑफ टी टू एनवायरनमेंट ही होगा, उल्टा नहीं होगा. Yes. Entropy. What is entropy? Entropy को find कैसे करें? How to define the entropy? एंट्रोपी वी कैन से दैट randomness or the I'm, I'm not able to think another word for entropy. I would say randomness would completely define the entropy part. Randomness in the system is called entropy. Yes. Basic concept is clear. Next question is regarding to first law of thermodynamics. What is isothermal process? Isothermal processor in which we are keeping the temperature constant. Yes. Any example? Isothermal process. Any reaction? Constant temperature?
Uh, I'm I'm sorry, sir. I'm not able to think right now. What is isobaric, isochoric, and adiabatic process? Can you explain? Sir, isobaric process in which we are keeping the overall pressure upon the system is constant. Yes. What is reversible reaction? What is irreversible reaction? Reversible reactions are those, sir, in which we can, if we are starting with a particular state of system and surrounding, we can get them again in the same state, both system and surrounding. Those are called the reversible reactions. And if we cannot bring them both in the system and surrounding in the same state, मतलब let's just say कि बस सिस्टम वापस आ पा रहा है, सराउंडिंग से सेम स्टेट में नहीं आ रही है या अपोजिट हो रहा है, सो दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. What is isothermal expansion and adiabatic expansion? Can you explain in ideal case? So expansion means increase of volume. So increase of volume happening in the condition of constant temperature, it's called isothermal expansion. Yes. एडियाबैटिक के केस में जो हीट है वो कांस्टेंट हो जाएगी. Yes. Basic question is clear. And what is Maxwell relations? So Maxwell relations are a very fundamental relationships between state functions. Maxwell relationships are, we can say, cross relations between state functions. There are various state functions like enthalpy, entropy, Gibbs free energy, Helmholtz free energy, volume, temperature, pressure. So how did the change of the Gibbs free energy, enthalpy, entropy, internal energy depends on temperature, entropy, pressure, volume part. Those are given by the Maxwell relations. What is the role of Maxwell relation in thermodynamics? इससे सर हम ये देखते हैं कि मान लो कोई भी दो हमने पैरामीटर लिए कि हमने डेल्टा एच का चेंज देखना है बाय कीपिंग डेल्टा टी कांस्टेंट, तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा. लाइक इफ वी हैव टू डिफाइन डेल्टा एच इज इक्वल टू pdv plus sdt. I'm not sure about the formula, but let's just say it is that delta h is equals to pdv plus sdt. So now I can decide if I'm taking the volume constant, on what factors does now system will depend. It will depend on टेम्परेचर. अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो अब सिर्फ वो वॉल्यूम पे ही डिपेंड करेगा. तो मतलब ये है कि सर अगर हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हम अगर एक रिएक्शन की एक कंडीशन को कांस्टेंट रख के एक को वेरी करवा रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या होगा, हम इस चीज को स्टडी कर पाते हैं. Yes, good. Entropy and residual entropy. What is the difference between entropy and residual entropy? सर एंट्रोपी हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ओवरऑल हम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं. लाइक नॉन जीरो केल्विन टेम्परेचर जो होगा उसके उस पे चाहे कोई भी एंट्रोपी होगी, 1 केल्विन, 2 केल्विन, कितने भी केल्विन पे, उसको हम एंट्रोपी कह देंगे. लाइक या थर्मल एंट्रोपी कह देंगे. रेजिडुअल एंट्रोपी होती है सर जो 0 केल्विन पे होती है. रेजिडुअल एंट्रोपी हम ये बोल सकते हैं ओरिएंटेशन की वजह से आती है. इसको एग्जांपल के तौर पे लें तो सर जैसे इन अ classroom, all the students are facing you, but one student is facing opposite side. टेम्परेचर हमने जीरो कर रखा है, हम कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, सो थर्मल एंट्रोपी इज जीरो. बट जिस एक बच्चे ने टीचर्स के अपोजिट फेस कर रखा है, उसकी वजह से तो एंट्रोपी होगी. दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल एंट्रोपी. वो कभी रिमूव नहीं हो सकती. लाइक हमने टेम्परेचर लो कर दिया, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होगी, बट जो उस एक स्टूडेंट की वजह से जो सिस्टम में रैंडमनेस आई है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल एंट्रोपी.
Yes, good. Good explain. Next is Joule-Thomson effect. What is Joule-Thomson effect and what is the role of Joule-Thomson effect in thermodynamics? जूल थॉमसन इफेक्ट में सर वी स्टडी द change in temperature with respect to change in pressure at the conditions of constant enthalpy. एडियाबैटिक कंडीशंस में हमने ये चेक किया कि प्रेशर चेंज होने पे टेम्परेचर का क्या चेंज आ रहा है. लाइक इफ a gas is flowing from high pressure condition into low pressure condition from a porous plug, सो उसमें क्या टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, ये सारा कुछ एडियाबैटिक कंडीशन में हो रहा है. सो अगर उसमें टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड अ रियल गैस. अगर कुछ भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो दैट विल कॉल्ड एन आइडियल गैस. Yes, what is the formula? So delta T by delta P at constant H is equals to minus 1 by Cp delta H by delta P at constant T. Yes, good. Yes, good. Regarding to thermodynamics. Next question is, what is difference between thermodynamics and chemical kinetics? Any one difference? Thermodynamics and chemical kinetics. So we can say thermodynamics is a subset of chemical kinetics. Chemical kinetics is a very broad term if we study. एक रिएक्शन पे हमने डिफरेंट चेंजेस का स्टडी किया, उसमें से एक चेंज है कि टेम्परेचर का चेंज किया हमने. मतलब एक रिएक्शन पे हमने बहुत सारे चेंजेस स्टडी किए, प्रेशर का चेंज स्टडी किया, वॉल्यूम का चेंज स्टडी किया, हमने कैटलिस्ट का स्टडी किया, प्रेशर का चेंज किया. हमने टेम्परेचर का जब चेंज किया, जो हमने उसमें हीट का चेंज किया, उससे क्या चेंज आ रहा है. जब हमने हीट का चेंज किया तो हमने कुछ आउटकम प्रपोज किया होगा, द स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं होगा, हीट इवॉल्व होगी, मतलब एमिट होगी, जो भी होगा दैट कम्स अंडर द थर्मोडायनेमिक्स पार्ट. लेकिन उस होल रिएक्शन पे क्या इफेक्ट हुआ, दैट कम्स अंडर भाई उसका रेट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, जो हमें आउटपुट मिली प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, या कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई, दैट कम्स अंडर द केमिकल काइनेटिक्स पार्ट. Yes, good. Good explain. Next question is difference between first law thermodynamics and first order reaction. Difference between first law of thermodynamics and first order reaction. Yes. So these both terms are, we can say, on different boards, like there is no relation in these. जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो सिर्फ ये बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने पे कि कितना चेंज होगा रेट ऑफ रिएक्शन में. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है कि एनर्जी जो है, मतलब मैंने अगर एक एक सोर्स से मैंने किसी रिएक्शन में एनर्जी दी है, तो वो कितनी कन्वर्ट होके उस रिएक्शन में जा रही है, उस रिएक्शन पे उसका क्या इफेक्ट होगा. वो जो हीट ट्रांसफर है वो मैंने कर दिया, मतलब वन फॉर्म टू अनदर एनर्जी गई. फर्स्ट लॉ इज जस्ट डीलिंग विद दैट. और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से डील कर रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्शन पे क्या इफेक्ट हो रहा Yes, good. Next question is difference between second law of thermodynamics and second order reaction. सर. अगेन सेकेंड लॉ टॉक्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी. मतलब मैंने कहा कि जो हीट है वो मैंने हाई हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी तक जा रही है, ये मैंने हीट ट्रांसफर दिखा दिया. अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वही है सर कि वो कॉन्सेंट्रेशन वाली स्पेसिफिक चीज को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज हो रहा है, कितने ऑर्डर से चेंज हो रहा है. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से जब फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड थर्ड ऑर्डर जो ऑर्डर रिएक्शंस होंगी ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही हैं. कॉन्सेंट्रेशन में हमने कितना चेंज किया तो रेट में कितने ऑर्डर का चेंज आया. Yes, good. Good answer. Basic. Next question regarding to chemical kinetics. Suppose
If you are in a lab, yes, how to find it zero order reaction? What is the process If I have a in a if I have lab? a what, sir? Lab, Lab. laboratory, Okay. yes. How to find it zero order reaction? And how to determine Sir, what is the process? zero order reaction पे sir I will just change the concentration of the reaction. मैं उसको इंक्रीज करूंगा, मैं उसको डिक्रीज करूंगा बाय नॉन नॉन फ्रैक्शन, मतलब मैं उसको डबल कर दूंगा, ट्रिपल करूंगा, हाफ करूंगा, तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा। वो जितना मेरे को प्रोडक्ट मिल जितने टाइम में मुझे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल रहा है, वो उतने टाइम में मुझे उतना मिल जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। दैट इज व्हेन आई विल से इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। What is the process? What is determination? Determine मीन्स ऐसा है, जैसे आप लैब में है तो आपके पास एपरेटस केमिकल सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप उसको मतलब डिटरमाइन कैसे करेंगे कि दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? कोई भी प्रोसेस क्या है आपके पास? ओके। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर? I'm sorry, sir. I'm not aware of the experimental part. जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो, आपको पता है कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि जैसे अमोनिया प्लस 3H2 हम रिएक्शंस कराएंगे तो दैट्स फाइन इट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन हम कराएंगे तो इससे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पता कर सकते हैं, क्लियर। मतलब एक जो ये ऑर्डर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो वही हैं कि मतलब वो उससे कैटलिस्ट आपको, रिएक्शंस जो हाँ जो यस हो रही ये, है वही। अब लैब में आपके पास कुछ भी नहीं है, विदाउट एनी, आपको कैसे बताना है लैब में बिना किसी सपोर्ट के, तो आप इन रिएक्शंस को करके आप फाइंड कर सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, क्लियर। यस, बेसिक thermodynamics and chemical kinetics is clear, basic concept related to interview. Next topic is organic. Yes, are you prepared? यस सर। Pericyclic reaction. What is pericyclic? Pericyclic reactions are those reactions in which there is a formation of cyclic transition state but no intermediate. Yes. Those organic reactions are called pericyclic reactions and which happen in the presence of heat or light. No catalyst is required in that. How many Those types of reactions are pericyclic called. reaction? There are four types of electrocyclic, cycloaddition, sigmatropic, and ene reaction. Chelotropic reaction Yes, those are also and group transfer. uh, pericyclic reactions. Yes, no? Five types of pericyclic reactions: electrocyclic, cycloaddition, sigmatropic, chelotropic, and group transfer. Heliotropic and group transfer. All right, sir. Yes. Can you explain one by one with example? Sir, cycloaddition reactions are those in which two molecules combine, like 4 plus 2 cycloaddition reaction. A chain of 4 carbon plus 2 carbon combined to form a 6 carbon cyclic pro- product. That is called cycloaddition reaction. Electrocyclic reactions are in which there is only one reactant and there are उसी में सर सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाइप बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होगी। दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, मतलब एक ओपन सिस्टम होगा एंड उसमें पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड आपस में
शिफ्ट होंगे और उसकी साइक्लाइजेशन हो जाएगी. that those are called electrocyclic reactions. Means only one Sigmatropic. unsaturated reactant. Yes, Simple. sir. Only one. Yes. Unsaturated reactant. Yes. One या two unsaturated. That's cycloaddition. Yes, Yes. sir. Then sigmatropic reactions are in which we can say one unsaturated substrate होगा that is broken into two radical systems, and that is combined again into one product, one unsaturated product. इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी जिसमें दो रेडिकल्स फॉर्म होंगे और वो फिर कंबाइन होंगे प्रोडक्ट में. तो दोज आर कॉल्ड Yes. Transfer of sigmatropic sigma reactions. bond. Yes, sir. Yes. Inside the same molecule is called sigmatropic reaction. And in group transfer reaction, sir, as again, transfer of sigma bond will take place, and one group of the unsaturated molecule will be transferred to another position in the same molecule. Yes. Good. Electrocyclic reaction. How many types of electrocyclic reaction? How many types of electrocyclic reaction? Yes. I'm sorry, sir. Rotations. I don't know the types. Con-rotatory, dis-rotatory. What do you understand about con and dis? Sir, con-rotatory and dis-rotatory are the directions of rotation of a bond. हम किस डायरेक्शन में एक बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोन एंड डिसरोटेटरी. दो बॉन्ड्स को अगर हमने सेम डायरेक्शन में रोटेट किया, दैट इज कॉल्ड कोन रोटेटरी. अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट किया, दैट इज कॉल्ड डिसरोटेटरी. FMO, molecular orbital systems. Do you know about यस सर. butadiene, 1,3-butadiene, 1,3,5 यस hexatrines? सर. Can you explain first of all ethene? Ethene, sir, ethene is basically formed from two, we can say, carbon moieties, uh, atomic orbitals combining to give two molecular orbitals, one of uh, bonding condition and other of anti-bonding conditions. So that is called ethene part. How many nodes present in ethene? Homo. Ethene के homo में how many nodes? Yes. Ethene homo will be shy 1, no, shy 2. Ethene homo will be shy 2, so there will be one node. Yes. Next is 1,3-butadiene. 1,3-butadiene में sir, there are, we can Coalunin. yes, sir. The 1,3-butadiene in this two ethene molecules combine to give two bonding condition orbitals and two anti-bonding condition orbitals. Yes. How many nodes present in ground state in 1,3-butadiene? 1,3-butadiene के ग्राउंड स्टेट होगी सर शाई 2, तो इसमें एक नोड प्रेजेंट होगा सर. और इथीन वाले में सर शाई 1 होगा उसका होमो, और उसमें कोई नोड प्रेजेंट नहीं होगा. Yes. Excited? एक्साइटेड शायद 3 हो जाएगी सर, उसमें दो नोड होंगे. Yes. मेनली देखो क्वेश्चंस इसमें ये रहता है, जो डायग्राम हम बनाते हैं होमो ल्यूमो
वो रिप्रेजेंट कराते हैं. एक्सप्लेन. दैट्स मेन इंटरव्यू क्वेश्चंस. हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू draw the diagram of 1,3-butadiene MO. Yes. Next is 135 hexatrines. 135 हेक्साट्राइन में सर we can construct the molecular orbitals by combining two allylic moieties. लाइक तीन कार्बन की हमने एक एलाइलिक मोइटी ली, उनमें हमने दो को कंबाइन कर दिया. अब उनको हम दो तीन बॉन्डिंग कंडीशन से कंबाइन कर सकते हैं और तीन एंटी बॉन्डिंग से. सो दैट गिव्स अस 6 टोटल ऑर्बिटल्स, 3 बॉन्डिंग एंड 3 एंटी बॉन्डिंग. Yes. How many nodes present in ground state in 1? 2 सर, शायद 3. शायद 3 होगा. होमो तो उसका 2 नोड्स होंगे सर. Yes. Excited. एक्साइटेड में शायद 4 होगा तो 3 नोड होंगे सर. Yes. Next is cycloaddition reaction. Can you explain with the example? Cycloaddition reaction, sir, in which two unsaturated molecules combine to give a cyclic product, and two pi bonds are broken, and three pi bonds are broken, and two sigma bonds are formed new. What is the selection rule of cycloaddition reaction? साइक्लोएडेशन रिएक्शन में ये होगा कि सर जो दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, एक का होमो यूज होगा और एक का लूमो यूज होगा. और selection rule of electrocyclic reaction? सिलेक्शन रूल ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में सर उसमें ये कि सर जैसे हमने कॉन रोटेशन या डिस रोटेशन करवाई है, उससे हमें जो इन फेज बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिलने चाहिए. लाइक हमने अगर कॉन रोटेशन करवाई, हम मान लो कि उसमें 3 पाइप बॉन्ड्स हैं, और हमने उससे अगर हमने थर्मल कंडीशन दी है, तो 3 पाइप बॉन्ड्स में थर्मल कंडीशन में वो डिस रोटेशन से ही उनमें जो बॉन्डिंग फिजिबल हो पाएगी. और अगर Allowed. हमने कॉन रोटेशन करवाई तो वो डिसअलाउड होगी. या हम जैसे सर कोरिलेशन एनर्जी डायग्राम बनाते हैं सर, तो उसमें हम सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक से वही हम उनको कोरिलेट करते हैं. सो वो ग्राउंड स्टेट आपने जैसे कहा कि वो वाली अलाउड होगी. और अगर हमने उल्टी रोटेशन करवाई तो वो बॉन्डिंग फेज में ऑर्बिटल्स आएंगे नहीं, तो वो डिसअलाउड हो जाएगी. Yes. Is a 4Q system, thermally and photochemically. Which one allowed? सॉरी सर, आई डिडंट गॉट. 4Q